Welcome back students to standard 10th physics chapter 10 reflection, light, reflection and refraction, and this is our second session. In the first session we learnt what is light, the concept of light. What is light? Electromagnetic wave of very short wavelength. Now we shall try to understand what is sunlight. Correct? Here is sun and here is earth. Well, the earth looks bigger, but sun is many more times larger than the earth. Remember, okay? Because the sun is very far away from us, it looks very small. All right, children. Now the question is, what is sunlight? Sunlight is actually the energy that we receive on the earth from the sun. Do you understand? Now, yes, this energy is nothing but electromagnetic waves of different wavelength. Please try to understand. Say suppose this is one stick, second stick, third, fourth, and these sticks I compile them, combine them, I take them together. Do you understand? I am taking cluster and tying it. You can say bundle of sticks. When they are clustered together, when tied together, we say bundle of sticks, collective noun, correct? Alright, so these are bundle of sticks. This is a cluster of sticks, you can say, right? If you consider those pen as sticks, like that, yes, the sun that provides energy to us is in the form of bundle of electromagnetic waves, a compilation of electromagnetic waves, a combination, a cluster of electromagnetic waves, and the electromagnetic waves has different wavelength. Okay, the first electromagnetic wave from that cluster is this what I am drawing. Try to understand, children. This is the first electromagnetic wave. Alright, ye crest. So this is wavelength which is symbolically taken as lambda. So let me say this is lambda 1, wavelength of the first one. Alright, let us consider the second wave. Cluster में से second wave draw करता हूँ. Right? This is the second wave. Alright, ये सारे combined together है. Third wave, the wavelength is different. Children, इसकी wavelength ये है. दो ट्रफ के बीच लेता हूं. This is lambda 3. Alright? और ये दो crest के बीच जो है, that is lambda 2. Alright? Now let's consider the next electromagnetic wave having fourth wavelength, lambda 4. All right. This is another electromagnetic wave and its wavelength, let's say it's lambda 4. Next electromagnetic wave in solar energy is this one, which I am drawing in blue color, right? And this is lambda 5. Okay, this is fifth wave of different wavelength. All right, next. Okay, children, can you see this? This is another electromagnetic wave having different wavelength. Alright, let's say this wavelength is lambda 6. Alright, and one more. Children, the wavelength is still smaller. Are you getting me, children?
So you can say 7 different types of electromagnetic waves combined together. This wavelength is lambda 7, ये distance, which is the smallest. So children, if you observe, the wave having biggest wavelength is lambda 1. The wave having smallest wavelength is lambda 7. And you can say lambda 1 is bigger than lambda 2. Lambda 2 is bigger than lambda 3. Lambda 3 is bigger than lambda 4. Lambda 4 is bigger than lambda 5. Lambda 5 is bigger than lambda 6. And lambda 6 is bigger than lambda 7. So amongst the 7 different types of waves having different wavelength, the topmost is having highest wavelength lambda 1. And the bottommost is having smallest wavelength lambda 7. Alright. And the combination of all these electromagnetic waves is called sunlight. And the diagram that you see here, that is called electromagnetic spectrum. इसको कहते हैं electromagnetic spectrum. So what is sunlight? Yes, sunlight is compilation of electromagnetic waves of different wavelengths. Are you getting me, children? Now we shall try to understand. Children, all these electromagnetic waves have different wavelengths and yet they travel with same speed in the air. In the air, they travel with same speed. Alright, to justify this statement, we'll do some calculations. But before that, look at this. We'll have to understand the two terms, wavelength, which you are familiar. Next, frequency. But look at this. This is one wave. Alright. Its wavelength is lambda 8. Let me say lambda 8. Now this is another electromagnetic wave. And they are traveling between distance A and B. Distance between A and B, jo bhi ho, both the waves are traveling in this direction. Is that clear to you? And this is lambda 9. Let me say, no doubt, lambda 8 is greater than lambda 9. That means length of this wave is larger than the length of the second wave. Children, as I said, these two waves, though they have different wavelength, they travel with the same speed. We want to justify that. Okay. So for that, first, A से B travel करने में time कितना लगा दोनों को? Say suppose they have taken 4 seconds. Alright. इसने भी time कितना लिया? 4 seconds. Because they are traveling with the same speed. So A से B distance travel करने में time तो same लगेगा एक दूसरे को. Correct? दोनों को. Fine. Now children, what is the distance traveled by the first one and distance traveled by the second one? Now see, suppose this lambda 8 is 4 unit. एक वेव की लेंथ 4 यूनिट है और lambda 9 is 2.5 units. Alright? Now देखो, यहां से यहां ट्रैवल करने में ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, this is third wave, this one is fourth wave and 5. So you can say 5 waves have traveled. How many waves? 5 waves. और एक वेव का लेंथ कितना है? 4. So 5 into 4. So 20 units. एक वेव का 4 units लेंथ है, तो 5 waves का कितना होगा? 5 times 4. So distance traveled is 20 units. Is that clear to you? Now second one, suppose ये 1, 2 like that 8, it will more waves will pass, correct? क्योंकि वो छोटे हैं, so more waves will pass. 8 waves और एक वेव का लेंथ कितना है? 2.5. So distance traveled is, yeah, I'll calculate here. 8 into 2.5 upon 10. 2 4s are 2 5s are 5 1s are 5 4s are 5 5s are.
So they also has traveled distance of 20 units. Distance तो 20 units दोनों ने travel किया. So now you can go for the calculation. Speed is equal to, speed is equal to distance upon time. अभी पहले वेव का डिस्टेंस कितना 20 यूनिट अपॉन 4 सेकेंड. दूसरे वेव का स्पीड कितना डिस्टेंस 20 यूनिट है. और 4 1 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 5 जा. So 5 waves per second. 5 waves per second. Sorry. 5 units per second. 5 units per second. Waves नहीं. Okay. 5 units per second. Waves per second लेना है तो यहाँ 5 waves per 4 second. तो 1 second में कितना? यहाँ 8 waves per 4 second. So 2 waves per second. इसको कहते हैं हर्ट्ज. दैट यू हैव लर्न्ड लास्ट ईयर. सो 2 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वन एंड दिस विल बी 1.25. 2 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वन. सॉरी 1.25 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वन एंड 2 हर्ट्ज. सो दिस इज ग्रेटर. जैसे वेवलेंथ छोटी होगी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी. आर यू गेटिंग मी? ये सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. ये सबसे छोटा वेवलेंथ वाला वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये सबसे ज्यादा वेव्स पास होंगे, ये सबसे कम वेव पास होंगे. सो यस चिल्ड्रन, वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा. करेक्ट. वेवलेंथ बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा. सो यू कैन से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वेवलेंथ बड़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो यू मे राइट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ. इज दैट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? ऑलराइट. और इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा. सो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. देखा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा. सो ये वेव की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ये वेव की एनर्जी सबसे कम होगी. सो लार्जर इज द वेवलेंथ, लेसर इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट वेव. स्मॉलर इज द वेवलेंथ, लार्जर इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, दैट वेव. ओके. नाउ ये फ्रीक्वेंसी की बात थी. तो यू कैन से एनर्जी. देखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो यू कैन से एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मतलब वेवलेंथ बड़ा है तो एनर्जी कम है, वेवलेंथ छोटा है तो एनर्जी ज्यादा है. ऑलराइट. डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? श्योर. सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. In the electromagnetic spectrum, the wave having highest wavelength उसे कहते हैं रेडियो वेव. दैट इज कॉल्ड रेडियो वेव. और रेडियो वेव्स यहां तो मैंने एक ही दिखाया, बहुत सारे साथ में जाते हैं, राइट. एंड उसके बाद द वेव हैविंग वेवलेंथ लैम्डा 2, वो लैम्डा 1 से थोड़ा छोटा. ऑलराइट. दैट इज टर्म्ड एज माइक्रोवेव्स. दैट इज माइक्रोवेव्स. फिर उससे कम वाला वेव है लैम्डा 3 वेवलेंथ वाला. दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स. देन द वेव हैविंग वेवलेंथ शॉर्टर देन इंफ्रारेड, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट. दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट. ऑलराइट. उससे छोटा मिला, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज. ओके. वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट, those waves are called X-rays. Those waves are called X-rays. और X-ray से छोटा वेवलेंथ वाला वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, they are called gamma rays. They are called gamma rays. So from radio wave to gamma rays, there are different electromagnetic waves clustered together, जिसे हम सनलाइट कह सकते हैं. And this is electromagnetic spectrum. Now in this sunlight, These 3 are very important for the earth. अर्थ पे ये 3 बहुत, others are also important. वो कुछ नुकसान भी करते हैं और important भी है. But these are very important on the earth. So children,
as you move from top to bottom, what decreases? Lambda, correct? So wavelength decreases, but frequency increases. Also, energy increases. But in the electromagnetic spectrum, when you move from bottom to top, the wavelength increases. So frequency decreases. So energy also decreases. So tell me, in this electromagnetic spectrum, which wave is having lowest energy? जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ हो ये, सो ये रेडियो वेव की लोवेस्ट एनर्जी है. रेडियो वेव हैज लोवेस्ट एनर्जी. ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी भी लो, फ्रीक्वेंसी भी लोवेस्ट है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एज वेल. और गैमा रेज हैज हाईएस्ट एनर्जी and highest frequency. Are you getting me, children? All right, children. All right, children. So we have just seen that sunlight is a cluster of electromagnetic waves of different wavelength. The highest wavelength is the radio wave. It has lowest energy and lowest frequency. And the wave having the lowest, smallest wavelength is gamma rays. It has highest energy and highest frequency. Okay, and then you can understand, as you move from radio wave to microwave to infrared to visible, what happens? Wavelength decreases, but energy increases and also the frequency increases. Excuse me. But if you move from gamma rays to X-rays to ultraviolet rays, if you move up, what happens? The wavelength increases, so energy decreases and frequency also decreases. Now let us have introduction to this different electromagnetic waves. Alright, children, let's see them, their wavelength range and their uses as well. Okay, children? Alright, electromagnetic wave, the first one, this radio wave, it is having highest wavelength. And the wavelength ranges from 30 centimeter to 10,000 meters. 30 centimeter. Now you know this is 15 centimeter. उससे double full ruler. Correct? तो उसका wavelength 30 centimeter हो सकता है या up to thousands of meters. Very big. Alright? Microwave, the next one. 1 millimeter to 1 meter. 1 millimeter to 1 meter. Alright? Then infrared waves, 7 nanometer to 1 millimeter. Visible rays, 400 nanometer to 700 nanometer. Nanometer is 1 unit of length. Alright. And 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 10 meter. Okay. उसका मतलब कि 1 मीटर लेंथ का 10 raised to 10 डिवीजन करो. 10 raised to 10 मीन्स 1000 crore इक्वल डिविजन्स करो, तो ये 1 छोटा सा डिवीजन है, दैट इज 1 नैनोमीटर. आगे का वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा कैलकुलेशंस और डिस्कशन करेंगे. अल्ट्रावायलेट रेज, इट्स वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. एक्स रेज 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर. एंड गैमा रेज लेस देन दिस 0.01 nanometer. So highest is 1000 meters, lowest is even less than this. Alright? Okay. So इसकी highest wavelength है, लेकिन frequency lowest है. Frequency lowest है. So energy भी lowest है. Energy भी lowest है. Just to remind you again. इसकी wavelength सबसे छोटी है. So frequency highest है. And energy also is highest. It has highest amount of energy. Now where are these different electromagnetic waves used? Radio waves. It is used in mobile and radio communication, broadcasting, radar and radio navigation systems, communication satellites, wireless computer networks. Alright? I'm not going to discuss much about them. Microwaves. It is used in satellite communication and microwave ovens. Infrared, therapeutic purposes, photography at night, TV remote control and other gadgets like heat sensing device. Alright.
visible rays, very important for visualization. Everything that we see on the earth is due to this visible rays, which is one component of sunlight. Ultraviolet rays, children, they are harmful. They possess plenty of heat, but they are also useful for the formation of vitamin D in the body. X-rays, detection of fracture in the bone, studying atomic arrangement in crystals and complex molecules. And gamma rays, they are also harmful. They can penetrate into the body of human beings. X-rays also can penetrate. So they are harmful to the body, but they are useful as well. It is used in radiotherapy for the treatment of cancer. Children, I said I'm not going to discuss this in detail because this is only for your knowledge. Alright, it is not given in the textbook, nor they ask in the exam. But still, for any objective question, ये आपको याद रखना होगा या ध्यान में रखना होगा. Are you getting me? Now this is very important. इसकी वेवलेंथ आप याद रखो, more than 400 ऐसे याद रखो. इसकी वेवलेंथ more than 400 और इसकी वेवलेंथ less than 7. I'm sorry, I made a mistake. This is less than 10 nanometer to 400. So less than 400 and 1 to 700. So it is more than 400 बोलो. इसको more than 400. ये थोड़ा सा करेक्शन देख लो. ये 400 to 10 nanometer. So this is less than 400. ये 1 to 700 मतलब more than 400. More than 400 nanometer है. ये 1 millimeter है. Don't forget that. Okay. So forget this. Alright. So ये तीन आपको याद रखना होगा उसका wavelength as well as uses. The rest you may remember or you may not. All right, children. I said these three are very important. But first I'm going to discuss about visible rays. जैसे sunlight is combination of electromagnetic waves of different wavelengths. Visible light is also a combination of electromagnetic waves of different wavelengths. And each wavelength represents a different color. So now we are going to have visible light. ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये है स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. ये है स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. टॉपमोस्ट इज रेड, फिर ऑरेंज, ये येलो, दिस इज ग्रीन, नेक्स्ट वन, ये ब्लू, दिस इंडिगो एंड दिस वन इज वायलेट. चिल्ड्रन, ये इंडिगो का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. ब्लू और वायलेट में वो स्प्रेड हो जाता है. ऑलराइट, ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. यहां सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको. देखो, रेड की वेवलेंथ 620 टू 750 नैनोमीटर. ऑरेंज उससे छोटी हो गई, येलो उससे छोटी, ग्रीन उससे छोटी, ब्लू उससे छोटी और वायलेट उससे छोटी. इसकी वेवलेंथ नहीं दी गई है. तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऊपर से नीचे वेवलेंथ कम होती है, वैसे स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट में भी ऊपर से नीचे वेवलेंथ कम होती है. करेक्ट. द वेवलेंथ डिक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. VIBGYOR आपको पता है, ये विब ग्योर ऐसे याद रखते हैं, है ना. V for violet, I for indigo and so on. Now see this. इसकी फ्रीक्वेंसी 400 to 484 tetrahertz. This is THZ means terahertz, and 1 terahertz is equal to 10 raised to 12 hertz. All right, ये relationship है. So what is frequency of red? 400 to 484. Now 484 to 508 बढ़ गया. Frequency increases. Still it increases. 508, 526, 606, 668. So frequency increases. Do you understand? Wavelength increases. Wavelength decreases. Frequency increases. So once again,
वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ 625, 95, 70 डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। और ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी 4, 484, 508, frequency increases. Once again, just to explain to you that wavelength lambda is inversely proportional to frequency. तो उसको लिखते हैं 1 upon f, ये सिंबॉलिकली दिखाया मैंने। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, सबसे बड़ा वेवलेंथ वाला रेड कलर का वेव है इनविजिबल लाइट। सबसे छोटा वेवलेंथ वाला वायलेट कलर का वेव है इनविजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला रेड कलर का होता है, दूसरा ओके लेट मी से दिस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, lambda 6 and lambda 7. So yes, in visible light the wave having wavelength lambda 4 is green in color. In visible light the wave having wavelength lambda 1 is red light and so on. So वो lambda 1, lambda 2, lambda 3 वो वेवलेंथ कितना है यहां मैंने बताया है, ये रेंज वाला वेवलेंथ है, आपको देखना है तो। What is lambda 1? Anything ranging from 620 to 750 nanometer. What is the lambda 5 blue one? Yes, its wavelength is ranging from 550 to 495 nanometer. 550 होगा, 560 होगा, 580 होगा, 595 नैनोमीटर वेवलेंथ होगा, तो वो वेव का कलर ब्लू होगा। आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? ऑलराइट चिल्ड्रन, इस दुनिया में आप जो कलर्स देखते हैं, दुनिया पूरी रंग बेरंगी है, लेकिन आपको जानकर हैरान होगा, यू विल बी सरप्राइज दैट देयर इज नो कलर इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड में कोई भी प्रकार का कलर है ही नहीं। आपका टी शर्ट का कलर, टीवी पे आप डिफरेंट कलर्स देखते हैं, ट्रीज के लीव्स ग्रीन कलर के हैं, ऑलराइट, ये कोई भी कलर होता ही नहीं है। ये जो कलर हमें दिखता है बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट नाउ। एनीवे, हियर वी एंड अप पार्ट 2. See you in the next session. Till then, goodbye.